Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Primary Skills once again. So this is the lecture 13. इससे पहले हम 12 lectures complete कर चुके हैं and this is the last lecture of this unit, second unit, which is listening and speaking skills. So make sure कि अगर आप इस पूरी unit को complete करना चाहते हैं, then you should watch all the videos which have already been posted over there and which are already available in the playlist. Okay. Another important thing, if you have not subscribed the channel yet, make sure that you subscribe the channel and hit the bell icon in order to give you the motivation. Apart from that, also by hitting the bell icon, you will keep on getting all the notifications related to all the videos which I keep on posting over here. So the videos might be related to your communication skills, your vocabulary skills, your personality development, your soft skills, and a lot many important skills or resources which are very much important for you to become an amazing communicator. Okay, so without further ado, let's go ahead and start talking about our today's topic, which is content and sequencing. तो आज का हमारा टॉपिक है कंटेंट एंड सीक्वेंसिंग. ये हमारा लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स जो यूनिट नंबर 2 है उसका लास्ट टॉपिक है एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 2 एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 13. इससे पहले 12 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. मेक श्योर कि आप उन्हें जरूर देखें एंड दिस इज द कोड BAS 105205 and this syllabus is specifically for AKTU first year students. So let's go ahead and start talking about our today's topic. So ये हमारा सिलेबस है एंड दिस इज द टॉपिक कंटेंट एंड सीक्वेंसिंग. और इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वी हैव ऑलरेडी कवर्ड देम like in all the lectures up to lecture number 12. So let's go ahead and start discussing our topic for today. So बच्चों, कंटेंट एंड सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है कि किस तरीके से आप अपने कंटेंट को सीक्वेंस करते हैं, किस तरीके से आप अपने कंटेंट को सीक्वेंस करते हैं बोलते हुए लिखते हुए. दैट इज व्हाट कंटेंट एंड सीक्वेंसिंग इज ऑल अबाउट, राइट? सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट. While speaking or delivering a content, sequencing becomes an important step if a lot of pieces of information are to be delivered in a particular sequence. अगर आप एक इंफॉर्मेशन को या बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में डिलीवर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक पब्लिक स्पीकिंग इवेंट में एक स्पीच देना चाहते हैं, प्रिपेयर्ड स्पीच देना चाहते हैं, देन यू नीड टू सीक्वेंस द इंफॉर्मेशन इन अ प्रॉपर ऑर्डर. अगर वो सीक्वेंसिंग गड़बड़ हो जाए तो आपका कम्युनिकेशन पूरा बिगड़ जाता है या फिर आपका कम्युनिकेशन डिजायर्ड इंपैक्ट जो है वो वहां पे नहीं डाल पाता. तो सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. प्रॉपर सीक्वेंसिंग रिक्वायर्स द यूज ऑफ सर्टेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस. अगर आप सीक्वेंसिंग को अच्छे तरीके से यूज करना चाहते हैं या सीक्वेंसिंग को बिल्कुल सही तरीके से एप्लीकेशन में लाना चाहते हैं, देन सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर देयर व्हिच यू शुड यूज. उन वर्ड्स और फ्रेजेस के बारे में आज हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे. Let us have a look at some of such words and phrases which can be used for sequencing. Such words and phrases are called the sequencers. ऐसे words और phrases को आप क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है sequencers. Okay? So हम जो हमारे content और sequencing के जो हमारे words या phrases हैं, इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. तो सबसे पहले सीक्वेंसर यूज्ड इन द बिगनिंग. जब आप अपनी स्पीच को स्टार्ट कर रहे हैं या अपने पैराग्राफ को स्टार्ट कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आप किस तरह से बिगिन कर सकते हैं. सीक्वेंसेस यूज्ड इन द मिडिल. किस तरीके से मिडिल में आप सीक्वेंसेस को यूज कर सकते हैं बीच में अपने सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए. सीक्वेंसेस यूज्ड इन फॉर द इंटरप्शन. अगर आप किसी को इंटरप्ट करना चाहते हैं या कोई आपको इंटरप्ट कर रहा है, उस सिचुएशन में आप किस तरह से अपने सीक्वेंसेस को यूज कर सकते हैं. एंड देन फाइनली सीक्वेंसेस यूज्ड इन द एंड. अपनी सिचुएशन को एंड करने के लिए, अपने पैराग्राफ को, अपनी इंफॉर्मेशन को एंड करने के लिए किस तरह के सीक्वेंसेस आप यूज कर सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गो अहेड. सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगनिंग. सबसे पहले हम बिगनिंग की बात करें तो ये जो जितने भी ब्लू कलर में आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं या फ्रेजेस दिखाई दे रहे हैं, वही बेसिकली आपके सीक्वेंसर्स हैं. फॉर एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं इन द बिगनिंग. जैसे मैंने एग्जांपल सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं, पहले एक फ्रेज दिया हुआ है, फिर मैंने आप एग्जांपल सेंटेंस दिया हुआ है. तो मेक श्योर कि आप दोनों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें जिससे कि आप अपने सेंटेंसेस भी बना सकें. केवल ये सेंटेंस से काम नहीं चलेगा. जैसे ही मैं ये सेंटेंस आपको बताऊंगा, मेक श्योर कि आप एक अपना एग्जाम्पल सेंटेंस जरूर बनाएं. ओनली देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्पेसिफिक सीक्वेंसर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इन द बिगनिंग. जब हम इन द बिगनिंग से कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? इन द बिगनिंग देयर आर ओनली हीलियोट्रॉप फ्लावर्स ऑन द ट्री टॉप्स. राइट, ये एक एग्जांपल सेंटेंस है. इन द बिगनिंग आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं. इसी तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल से आप अपनी बिगनिंग कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट यू टू रिव्यू व्हाट वी लर्नड यस्टरडे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल से यानी सबसे पहले मैं ये बात करूंगा. इस तरीके से आप अपनी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं. वंस अपॉन अ टाइम, ये जनरली स्टोरी टेलिंग के लिए यूज किया जाता है. वंस अपॉन अ टाइम, आप इससे भी अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस. राइट, इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग. देन वन डे, यू कैन स्टार्ट विद वन डे. One day, the beginning of new career journey will commence. Today is not that day.
राइट तो वन डे से आप स्टार्ट कर सकते हैं. इन द सेम वे फर्स्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन दैट द रूल्स ऑफ द गेम. राइट ये आपके बिगनिंग वाले सिक्वेंसर हैं. और इसके अलावा फर्स्टली से आप स्टार्ट कर सकते हैं. फर्स्टली दे आर नॉट एफिशिएंट एंड सेकेंडली दे आर एक्सपेंसिव टू मेक. टू बिगिन से भी आप अपना सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं. टू बिगिन विद शी इज टू यंग फॉर दैट काइंड ऑफ जॉब. ओके टू स्टार्ट भी कर सकते हैं. टू स्टार्ट विद वी हैवंट इनफ मनी एंड सेकेंडली वी हैवंट इनफ टाइम. वंस से आप सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं. वंस आई हैव डन दैट इट्स अ पीस ऑफ केक. राइट तो ये सारे आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होने वाले बेसिकली सीक्वेंसर्स थे. अब हम बात करते हैं सीक्वेंसर्स यूज इन द मिडिल में जब आपके सीक्वेंसर्स यूज होते हैं जैसे कि मीन वाइल इसी बीच में. राइट हिंदी में इसका मीनिंग होता है इसी बीच में. मदर वेंट शॉपिंग मीन वाइल आई क्लीन द हाउस. राइट मेरी मदर शॉपिंग के लिए गई इसी बीच में मैंने घर को साफ कर दिया. राइट देन इफ यू आर सिटिंग कंफर्टेबली देन आई विल बिगिन. राइट देन का यूज कर सकते हैं. आफ्टर दैट जब आप एक के बाद दूसरी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं. आफ्टर दैट न्यूज आई नीड अ स्टिफ ड्रिंक. ऑलराइट लेटर इट ट्रांसपायर्ड शी हैड फेल्ड द एग्जामिनेशन. लेटर मतलब बाद में. राइट नेक्स्ट ये जब आप एक इंफॉर्मेशन के बाद दूसरी इंफॉर्मेशन को ऐड करना चाहते हैं तो दीज सीक्वेंसर्स कैन बी यूज्ड. नेक्स्ट टू हिज टेंट फेस हर सीम्ड पैलिड एंड अनहेल्दी. राइट तो नेक्स्ट आप अपनी सीक्वेंसिंग के लिए यूज कर सकते हैं. इसी तरीके से सेकेंडली लॉयर्स एंड इकोनॉमिस्ट अप्रोच प्रॉब्लम विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. देन थर्डली ऑब्वियसली जैसे सेकेंडली यूज किया ऐसे थर्डली भी यूज कर सकते हैं. थर्डली द न्यू स्टाइल गाइड्स हैव क्लियरली बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय सम इंटरेस्टिंग ग्राफिक डिजाइन वर्क. फर्दरमोर राइट इसके अलावा या इससे आगे he is old and unpopular. Furthermore, he has at best only 2 years of political life ahead of him. In the same way, moreover भी आप यूज कर सकते हैं. I don't like skating. Moreover, the ice is too thin. Right? In addition, मिडिल में यूज करने के लिए in addition अगर आप कुछ चीज ऐड करना चाह रहे हैं बीच में. In addition to my weekly wage, I got a lot of tips. Then subsequently मतलब इसके बाद में. Subsequently, new guidelines were released or issued to the employees. Subsequently, end में या फिर सबसे बाद में. After, my legs were tired after so much walking. And then before, she worked as a librarian before switching to the journalism. तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही common words हैं, but again, sequencing के लिए these words are very, very important if you really want to put the information in a particular sequence or particular order. Then comes your sequencer used for interruption. राइट इंटरप्शन मतलब जब आप इंफॉर्मेशन को इंटरप्ट करते हैं या फिर आप इंफॉर्मेशन में कोई दूसरी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सडनली ही स्कूटेड आउट ऑफ द रूम. ऑल ऑफ अ सडन आई हर्ड एन ऑलमाइटी क्रैश फ्रॉम द किचन. बट देन ही डिसाइडेड टू प्ले हिज ट्रम्प कार्ड. ओके ये तीन सीक्वेंसर्स जो है आप इंटरप्शन के लिए यूज कर सकते हैं. एंड देन फाइनली कम्स द सीक्वेंसर यूज्ड इन एंड. राइट Finally, they arrived in the safety zone. At last, I was able to work undisturbed. In conclusion, I hope the preceding argument have convinced you of the need for action. To summarize, this is a clever approach to a common problem, and at the end of each level, you take the exam. So these are some of the common content sequences. And इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं? Afterward, the boy became very famous artist. In the end, we all decided to organize a concert for Easter. Lastly, I would like to ask you about your plans. Akhirkar, every man should marry. After all, happiness is not the only thing in life. By the end of the course, I was complete basket case. By the end, भी आप यूज कर सकते हैं. And then इसके अलावा, by this point, right, इस समय तक, by this point, the council had initiated the first of several large redevelopment projects proposed by the business elite. And then finally, eventually मतलब finally, जैसे हम finally बोलते हैं इस तरह से हम eventually बोल सकते हैं या फिर आखिरकार और बिल्कुल अंत में. Eventually, you will learn to cry that on the inside. Okay? तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अपने सीक्वेंसर्स. तो कंटेंट इन सीक्वेंसिंग बहुत ही छोटा टॉपिक था. आई होप कि आपकी समझ में आया होगा. इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू आस्क मी, प्लीज डू कमेंट, डू कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम. If you have not joined the Telegram channel, make sure that you join the Telegram channel so that you can download all the notes, right? Another important part, this unit has been completed with this lecture. Now we would be starting our third unit
and the first unit के जो lectures बचे हुए हैं वो parallelly आपके चलते रहेंगे. I'm preparing them, so I'll definitely be delivering them very soon. So if you have not subscribed the channel yet, make sure that you subscribe the channel and you hit the bell icon so that you can keep on getting the notifications to all the videos, right? Please do comment, do subscribe, and do share your ideas, your suggestions, your comments, and also make sure that you share the video with your colleagues and with your you can say like learning partners, so that they can also be benefited. Thank you so much for reaching up this point, and make sure that you watch all the videos of the second unit in order to have a complete clarity of the second unit. Thank you so much once again. See you in the next video. Have a good day ahead.